ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's Bhagavad-Gita class. We are studying 4th chapter, verse number 14. In the previous verse, Bhagavan said that he has created the 4 varnas and still he is the Akarta. So this is a great surprise if some person is Karta as well as Akarta. It appears contradictory, like if you say I have eaten food but I have not eaten food. I slept but did not sleep. I went but I did not go. So this is contradictory. So what is the solution? So regarding that, he speaks the next verse, the 14th one. And in this verse, it is also said that one who does
work by understanding how Bhagavan is not the Karta, even though being the Karta, बनते हैं, क्योंकि पहले how उन्होंने कहा he था does not become bound by karma. एवं वो वेत्ति तत्वतः कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, Earlier, he वो had कर्म said फल that वाला his है, birth and activities are इसको वो transcendental. तत्व से So, there जानना also ही he had used the word तत्व karma. से जानना So, ये है कि understanding वो कर्म the करता karma है लेकिन by कर्म फल tattva. उन पर लागू नहीं होता है। इस संसार में So, कोई भी understanding that he does karma, but he does not उसकी become एक bound प्रक्रिया by it. होती है। In this world, whenever we do something, we get a reaction in तो the sense that we get the उसमें fruit जैसे of हम the work. बंधे ना बंधे So, उसको कर्म फल बोलते हैं। कर्म फल का मतलब do यहाँ we इसलिए get है कि bound or not bound? उस कर्म That के is the meaning of the karma फल phala, आएंगे। the fruit of action. जो कहते हैं कि मैं उसको करता नहीं हूँ, कर्म फल से बंधता नहीं हूँ, तो कर्म का फल तो आएगा So when he is लेकिन telling उसमें that फिर I उससे हम am बंध the नहीं सकते, karta but not the karta, और बंधे meaning नहीं that रहेंगे फिर हम he will उसको get the सोच fruit but he नहीं will not be पाएंगे bound by it. कि हमको दोबारा जन्म So लेना what पड़ेगा, happens to us is that we become bound by the उससे karma, कैसे बचाया जाए। and then our cycle of birth and death continues. So how do we protect ourselves from being bound बहुत by karma? महत्वपूर्ण है, So है पूरे Bhagavan is धर्म की teaching यात्रा that. है वो। So this is a very important chapter, and in the entire chapter he जन्म से हुए explains karma, कर्म and he से will tell how to perform karma and still इसलिए यहाँ not पर become कृष्ण bound by कहते हैं it. नवाम So he कर्माणि says here, सिद्ध्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म फिर न सबध्यते। कर्म मुझे बांधते नहीं हैं translation, क्योंकि actions मेरे do not bind अंदर me में कर्म फल because I नहीं am है। devoid of desire for the fruits जो of इसकी बात actions. जानता है One who knows वो me कर्म thus से is बंधता not नहीं है। bound by actions. तो यहाँ पर उन्होंने कारण बताया है कि So here he is कर्म telling the वाले क्यों नहीं है, cause, क्यों the उसको reason करता बोला why है। he does not become bound by karma and why he क्योंकि tells उसको that he himself is the akarta. So लेकिन he is the उसकी karta because he is doing ज्यादा action, इच्छा नहीं है, but he does not have any desire for the fruits of the action. तो इसलिए वो अपने को He does not have अबद्ध any attachment to that. ऐसे So नहीं that's मानता why है। he says he is the akarta, ऐसा the नहीं है non-doer, कि as if he has हम not जो done it. कर्म करते हैं Why? इसलिए Because when करते we हैं do some कि karma, इससे कुछ when we do some activity, we desire the some result from that activity. Otherwise, we will इसलिए not ये perform that activity. कोई संस्था कहे कि हमारे आकर यहाँ If some काम company करो, or organization tells you या that कोई come to us and do this work, तो आप जाएंगे, otherwise you will not get मैं salary, मूर्ख हूँ क्या, मेरा दिमाग then will खराब है you क्या, work there? You will say, am I a fool? Am I mad that आप मेरे को I work पैसा for दो। you and you do not तो आप pay कर्म me करते हैं money? इसलिए कि आपको उसका So फल you मिलेगा। work for result only. भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं करता इसलिए And हूँ here कि मुझे Bhagavan फल is मिले, telling, I work क्योंकि because वो I do not महात्मा हैं, want anything. उनकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, Bhagavan is Aptakama, all his desires are already fulfilled. सबके मन में आता है कि So ऐसा this is कैसे a होगा very कि मैं कर्म के फल की इच्छा complicated question that people पूर्ण कर ponder सकूं। over, that how is it जैसे possible that प्रश्न आया था कि I भगवान ने कहा था कर्मण्येव do karma without अधिकारस्ते any मा desire for result. तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ये So कैसे this संभव question है, is asked again and again, how is क्योंकि this हमें इसका कोई possible? अनुभव नहीं है। Because we do not have any क्योंकि prior जितने भी अनुभव experience of हमारे working like अभी this without desiring result. वो इस बात का ही अनुभव है All कि the हम कर्म experience करें that we have in life is लेकिन that we should perform एक karma अवस्था भी and we ऐसी get आएगी result for that. जब आप कर्म करें और फिर But there उसका is अनुभव ना another हो, situation also, that where you perform karma but you do not हम have संसार में desire for जैसे जब हम result. सांस लेते हैं तो हमारा सांस चल रहा है, लेकिन सांस लेने के बारे में तो हम अपने आप को ऐसे नहीं It is सोचते like हैं कि मैंने we आज are इतनी सांस ली breathing, है, देखो or we do कितनी not ली है। count that today I breathed so many ऐसे times, हमारी see how लाइफ much चलती work I है, have done. So we do not have any जैसे attachment to जैसे that. By the life हमारा force, दिल it is धड़कता going है on. तो हम कहते नहीं है कि हमने इतने बार Our किया, heart is beating, so we do not say that मैंने we इतनी made मेहनत our की, heart हम beat नहीं so कहते। many times, we worked so hard, now we तो are ये tired. करते रहते हैं, लेकिन ये So it क्रियाएं keeps हैं, happening. These are क्रियाएं और activities. कर्म में इतना ही अंतर है। This is the difference between Kriya क्रिया and Karma. मतलब कुछ हो रहा है, कुछ Kriya means something is एक्शन हो रहा happening, है, some action is कर्म तब happening, बन जाता है जब and it किसी becomes अपने karma ऊपर अपना when कर्तृत्व
when we establish our doership on that, we claim थोड़ा doership on उसमें that action, अहंकार आ जाता है when कि मैं इसको we करने वाला हूँ और put इसको our करने का ahankar in that, अधिकारी हूँ मैं। that I am the doer and कोई भी therefore I क्रिया have करने the से right to get that such and such पहले वो particular क्रिया result, की है, जैसे हम श्वास प्रश्वास then it लेते becomes हैं karma. Otherwise, it is just और an हमारा जीवन just an like any other activity, महत्वपूर्ण like क्रिया we है, are breathing हम उसको कभी कर्म नहीं मानते हैं। continuously. It's such an important activity, but we do not और consider उस it पर as a हमारा ऐसा karma, कोई नियंत्रण भी नहीं है। and actually we do not have any उसको control also over that. अगर And नियंत्रण it होता is good if we would have व्यस्त रहते तो had कोई control दिक्कत over नहीं that, होती इस then जीवन में। whole day we would have been busy तो इसलिए यहाँ managing our breathing only. भगवान कारण बता रहे हैं कि So here Bhagavan is telling the reason कर्म का फल मेरे को why बांधता नहीं he does not become bound ना मैं कर्म by फल the स्पृहा, karma phala. मुझे कोई स्पृहा नहीं है। That is because he does not have any desire for the और result, उसका उनके लिए तो मूल to कारण enjoy यही the है कि result. वो स्वयं अपने आप में And the main reason for that is he is complete जो in भी कार्य himself. करते हैं वो अपनी कुछ Whatever त्रुटि actions पूरी के लिए करते we हैं, do to fulfill some कुछ lacuna, some कार्य करते deficit in हैं our life. तो If हम we are कार्य से doing some activity, हमारी we are doing कमजोरी it है, because we have something lacking within us, इसलिए हम वो and क्रिया करते in हैं। order to fulfill that gap, we जो have to व्यक्ति do some work. परिपूर्ण है But the person who is complete in इस himself, दृष्टि से कार्य नहीं करेगा। that person will not वो work कार्य with करते this करते सोचता viewpoint, है मेरे को भूख लगी desiring है, to get some मैं खाना result, खाऊं, तो भूख thinking that I am इसलिए खाना hungry, खाते हैं, so I want food. लेकिन वास्तव में तो वो तृप्ति है सदा। So he is always full, और उन्होंने तृतीय he is अध्याय में always भी बताया satisfied. था कि He told in the तम third तम chapter also प्रवर्ते च कर्मणि, कि मेरे को तो कुछ प्राप्त करना नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्रिया करता हूँ। that I do not have to वास्तव attain में तो anything, उनको कुछ still I प्राप्त नहीं करना perform है, फिर वो क्रिया करते action. रहते हैं। So this is surprising that if he does not want to attain ऐसा any क्यों result, करते why हैं does he उसका perform कारण action? बताना है। So the answer is that he performs action to give कहते हैं pleasure कि to others. उद्देश्य His goal, his objective शास्त्र of performing action is to give pleasure to उसका others, and आनंद in that process, he also आनंद से ही becomes उसकी क्रिया happy. निकलती है। आनंदाद है वही His कर्माणि, actions originate from his ananda only. कि जितनी भी सृष्टि भगवान करते हैं So it is said that आनंद से ही whatever करते हैं। creation Bhagavan has made, he does it out हमारा of अलग है कि इस ananda, सृष्टि में out हम of जो है pleasure. दुख की Now रचना it is करते हैं, another point that we living beings, इसलिए we create suffering in this world, and that happens because we do not want to listen to him. अपना अहंकार में We चलते हैं। use तो our इसलिए buddhi, we work on our ahankara, and then we suffer. इसलिए गीता में आगे भगवान कहते हैं इस बात को कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम That's कारते why in Gita Bhagavan न says, स शांति मवाप्नोति न सुखम न पराम गति, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो क्योंकि हम शास्त्र की विधि को नहीं मानते, यानी कि उन्होंने जो हमको ज्ञान so दिया है, we जो do not उन्होंने हमको शिक्षा दी है, obey the rules of जैसे Shastra, whatever knowledge he पिता has जो है given, we do not follow that. बच्चे को शिक्षा देता है कि Like तुम a इसको father teaches his son अध्ययन that करो, do this, do that, तो study, बच्चा मानता don't नहीं है, play all the time, but the child doesn't तो listen to आगे his जाके father, उसको फिर दुखी उठाना and पड़ता then है। later the child has to suffer तो when he इसलिए grows वो up. कह रहा था कि वो खुद सुखी रहे, So the father was instructing बच्चा him खुश रहने लगे। for the child's benefit only. बाप The को father जब doesn't have संतान to है तो वो अपने लिए सब gain कुछ any करने को advantage तैयार from रहता that. है, If the father is capable, he will make all arrangements for himself, even in old लेकिन age. अगर अपने अंदर But योग्यता प्राप्त if नहीं करता है the तो son उस पर थोड़ी does not कृपा नहीं qualify होती। himself, does not become capable, then he तो has to इसलिए suffer when he grows up. पिता के समान हमको शिक्षा देते हैं That's शास्त्र why, जो so है similarly, like a father, Bhagavan teaches कर्म us. मोक्षाय This is the कर्तव्य instruction of Shastra. अगदो यथा। भगवान स्वयं कहते हैं कि एक कर्म Bhagavan tells मैंने himself इसलिए दिया था कि इसको that I have given this yoga लोग so कर्म के that बंधन से मुक्त हो जाए। people follow this and become liberated from karma, from लेकिन the हम clutches ये of karma. सोचते हैं कि भगवान But we हमको think कष्ट दे रहे हैं। that Bhagavan himself is giving this suffering in our life. एक विडंबना है, बहुत This से is लोगों a को great ऐसा लगता है कि paradox. भगवान ही Many कष्ट दे people रहे हैं, think that भगवान को कष्ट Bhagavan नहीं देना gives चाहिए, suffering भगवान to अपने human कष्ट दूर हो beings. जाए। Why does Bhagavan not do तो ऐसा something क्या जब आप to मानते relieve हैं all the suffering from our life?
But the point is that what can Bhagavan do? Because he knows that we will not obey him. We will not listen to him. तीसरे अध्याय में In एवं the third chapter, he said that he had made a system. वर्तयति घायुरेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ संजीवति। उन्होंने कहा मैंने एक ये चक्र He शुरू said कर that दिया है I have made this कि आप cycle अपने कर्तव्य कर्म की that यज्ञ की बात वहाँ यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब भी वही है, यज्ञ धर्म कर्म एक ही बात है। so yajna means that only yajna dharma karma तो is same only. उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि इसके So he अनुसार आप has made a चलिए system तो आपका and जीवन that सुचारू you रूप से follow चलता this, रहेगा। and then your life will इस जीवन काल progress में आप smoothly, and after this मुक्त life रहेंगे। you will become तो उसमें liberated एक also. बुद्धि है, He has given this जैसे वो system, कहते हैं कर्मणैव हि like he संसिद्धिः says आस्थिता जनकादय, कि कर्म का पालन करके ही जनक that आदि जो by following karma वो only, कर्म से मुक्त हो Janaka and जाते other rishis, they became liberated. हैं। एक सुदृढ़ मार्ग उन्होंने बनाया है। So this is a जिन लोगों ने जो very लोग nice चले हैं system that he has उनको made, मान लिया and जाता है those कि who वो followed this चलते हैं और system, वो they कर्म से benefited मुक्त from हैं। that, and those who do not follow, they suffer. वो And राक्षस then these are the same people ऐसा नहीं करते हैं। who accuse Bhagavan, who make the allegation that why is he not doing something for us. So then the answer is that what can Bhagavan do अगर हमको उन्होंने एक स्वतंत्रता दी है, if he has given us some freedom कार्य करने की to do some क्षमता work, दी है, हमको बुद्धि दी है, इंद्रियां दी हैं, if given some तो अगर हम capability, given उसका us उपयोग करते हैं indriyas, तो हम कर्म से मुक्त if हैं, अगर we दुरुपयोग करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। if we use it इसमें हम कुछ नहीं कर properly, सकते। then we will benefit. Otherwise, we will become implicated. तो इसी को वहां पर He has given समझाया us कि knowledge also. So that is what he is भगवान explaining here, that भगवान इतना कर्म I करते do हैं कि और karma कोई कर and नहीं सकता है, कि nobody जितना can वो do करते as हैं much action that उससे Bhagavan किसी does, में नहीं because ऐसा nobody has सामर्थ्य as है। much energy as Bhagavan. Bhagavan creates वो this सब whole छोड़ world, करके भी वो but even after creating this world, he remains detached from संस्कृत में this. जो उनके 6 गुण गिनाए हैं, In the word सबसे Bhagavan, the six qualities which are शीर्ष में enumerated, ज्ञान वैराग्य, तो उनमें वैराग्य भी है। one of the वैराग्य six ही एक इतनी bhagas, छोटी six वस्तु है, opulences is Vairagya, इसमें हम सब जुड़े renunciation. होते हैं, So the Vairagya is that he creates this world but he remains संसार detached से from जुड़े it. हुए हैं। If we create a house, we become so much इसका मतलब attached ये to नहीं it. कि वो इसमें आसक्ति Now नहीं है this तो does इसकी not देखभाल नहीं mean करता, also that if he is not detached from this, if he is detached from this world, he does not उसको bother विश्राम about देता it, he है। does not take care of it. इसलिए भी उन्होंने कहा कि No, धर्म he maintains संस्थापनम it, यथाय संभव, he nourishes it. कि यहाँ पर जब व्यवस्था It कहीं was नहीं told है earlier also that when there तो is वो धर्म disorder बन जाता in है। the system that he created, तो धर्म then he संस्थापन क्या appears है? in every yuga. मैंने कहा कि धर्म So शब्द का अर्थ establishing ऐसा dharma है means there, कि as I पर्यावरण said से earlier, dharma and karma are ये जो synonyms. कर्म यहाँ पर कह रहे हैं वो कर्म Because the karma that is speaking of here, तो आगे it जाके कहेंगे means कि जो विधि karma नहीं है according to उसको vidhi. विकर्म कहेंगे। Later he will say the karma which is not according to तो ये vidhi, that is संस्थापन करने vikarma. के लिए आते हैं, इसी So चक्र को he उन्होंने कहा कि comes, मैंने 4 he वर्णों की appears to व्यवस्था की establish this only. ताकि And for लोग this उसके only he हिसाब said से that I चलें। created the four varnas so that लेकिन people उनमें can से work according to their swabhava, according to their nature. Because if we do not work according to our swabhava, our nature, then definitely there will be corruption. Because we will not be interested in that कुछ work, करेंगे and due to lack of उसमें interest we will be dissatisfied, and कुछ ना कुछ विकार ही पैदा करेंगे, then we will bring some deviation मानव or जीवन में हमारे corruption in संबंधों में, our life, in others तो उसका lives. फिर प्रतिफलन तो आएगा ही। So then it will definitely give its result इसलिए उन्होंने also. ये व्यवस्था बनाई है। So that's why Bhagavan तो अगर created हम इस this व्यवस्था को system. समझते नहीं है तो हम ही But if we do not understand this system, then it is we only who will be at a इसलिए यहाँ पर वो loss. कहते हैं कि That's इस why बात here को he नहीं is जानते saying कि इस प्रकार से जो मेरे को जानता है that one who कि knows मैं me कैसे काम thus, करता हूँ, that how I वो work. कहते हैं कि वो भी कर्म से So बंधे Bhagavan हुए हैं। says that even that person will not become bound तो by ये karma. आश्चर्य की बात है कि So इसको now this जानने is के बाद surprising that simply by understanding, by knowing how Bhagavan तो functions, उसका कारण a यही है कि अगर person मैं जानता becomes हूँ liberated. He does not तो मैं become अपने bound. ज्ञान के अनुसार ही मैं उस पर काम So the करूँगा। answer is that if I know, then ज्ञान it's something, then I will work according to my knowledge only. तो मेरा अगर ज्ञान सही होगा
तो मेरी फिर इच्छाएं भी ठीक होंगी, So मेरा if my कर्तव्य knowledge भी will be ठीक होगा, correct, मैं ठीक से my कर्तव्य करूँगा। desire will also be correct, जब and if my अविद्या desire is है, correct, I will work also ज्ञान correctly. गलत है, मैं ज्ञान को And if गलत my समझता knowledge हूँ, only is wrong, मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तो फिर मैं उसी के and अनुसार if ही my विचरता intelligence is हूँ और उसी के अनुसार मैं under illusion, then I कर्तव्य will से उठाता हूँ। desire accordingly and I will work accordingly, and then I will suffer. कहते हैं कि ये माम So अभिजानती, Bhagavan is अभिजानती telling का here, मतलब अच्छी तरह से जानता है, one who और understands अभिजानती का मतलब properly, clearly. अच्छी तरह से मेरे को ऐसे पहचानता है And here Abhijanati also means that one who knows me, recognizes me very nicely, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कैसे कर्म properly, करता that हूँ। who I am, तो यही how बात I हमने work. पहले भी कही थी। तो ज्ञान का बहुत So he महत्व had told about this earlier also. देखने में सरल सी बात लगती है, लेकिन आगे भी भगवान इस बात को कहेंगे So कि jnana has lot of value. It appears very बहुत simple, पुरानी है but वेद, later also Bhagavan will ज्ञान say से ज़्यादा पवित्र that ग्रंथ there is nothing कोई as और दूसरा purifying as नहीं है, knowledge, क्योंकि as हमारी जो jnana. अविद्या है, अज्ञान Because है, our avidya, the उसके ignorance, the कारण ही agyana, हमारी फल में आसक्ति due है। to which we remain उसको अगर attached to हम fruits of actions, we can get rid of that through हमारी जो अविद्या है, jnana, through knowledge only. उसका समाधान ज्ञान से The ही है। solution for the मोक्ष disease प्राप्त of करने our के लिए avidya is jnana only. If we do not obtain सबसे knowledge, पहले then we will remain in ignorance only. And it is the goal of human, the purpose of human life is to get जो knowledge. पशु पक्षी हैं, This is how human being is वो different from ज्ञान other प्राप्त नहीं कर species. सकते हैं। The birds, the animals, they हमारे cannot अंदर में attain such knowledge. They सुविधा नहीं है। do not have this kind of faculty, this पांच facility to get such पांच knowledge. इंद्रियां हमारी हैं, The kind of senses, जिस प्रकार से the हम sense organs that जिस we प्रकार have, से हमारी by which बुद्धि we है, can obtain knowledge, the kind of intelligence that we और have, हम उस it बुद्धि is को not there in the birds, बहुत animals, बड़ी the other species. भगवान की कृपा मिली हुई है ये मनुष्य So जीवन में। this buddhi, intelligence, is a great mercy given to us by जिसके Bhagavan. कारण हम What दूसरों happens से is भी we misuse that intelligence, and due to that, अगर आप we देखें become worse than वो लोग भी animals. कष्ट नहीं उठाते हैं So if you जितना मनुष्य see कष्ट उठाता है। animals and the other species, they do not suffer so much like जितना human दुराचार, beings. भ्रष्टाचार, The level of corruption, जितनी अनैतिकता, जितना क्राइम crimes, मनुष्य समाज में होता है, unethical behavior तो ऐसा कोई that is चीज seen नहीं है in human society, जो we आपके do not साथ ना see हो। that in the animal बलात्कार, kingdom. हत्या, Theft, ऐसा rape, पशुओं में तो नहीं होता। murders, all these things are not seen in animal society. It is पशुओं seen के in अंदर human में society. In the animal society कारावास नहीं kingdom, है, there is no कोई न्यायालय नहीं है, concept of any उनको jail, न्याय करने के लिए न्यायालय नहीं जाना पड़ता है, there is no court. क्योंकि उनके They यहाँ do ये not सब have नहीं to है। go to court for getting उनके पास में justice ऐसे कोई because they don't need all this. औषधालय भी नहीं है, They do not have वैद्य भी नहीं है, any और pharmacies, मेडिकल doctors, कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है, no need to go to medical फिर भी वो colleges, स्वस्थ रहते हैं। and they still remain healthier तो उसका than कारण us. क्या है? What is the reason? उसका कारण यही है The reason is this कि only, जो सुविधा हमें दी that है the भगवान ने, facility that Bhagavan has given to us to get वो सुविधा knowledge, उनके पास है नहीं, तो इसलिए the वो animals, they do not ऐसा have this अहंकार भी नहीं करते, facility. क्योंकि उनके पास So अहंकार की when शक्ति they नहीं do है। karma, they do not become proud of that. They do वो not सिर्फ attach ऐसा their करते हैं कि ahankara to अपना that. पेट भर जाए और अपनी सुरक्षा They हो do जाए, only that much इसलिए वो karma that कुछ is करते नहीं, required to तो fill इसलिए उनको their तनाव भी नहीं होता, stomach for them to क्योंकि survive. उनके पास में They do सुविधा not work too much, and that's why है, they do not सुविधा have है। much anxiety or tension also. तो वो ऐसे ही है And जैसे they do not have facilities also to do that. एक छोटा So बच्चा it is होगा, like, suppose there is उसको a भोजन मिल small गया, child, he gets his उसकी or her आवश्यकता food पूरी, and gets खेलता ही proper रहेगा sleep इधर उधर, and just play a little bit here and there, and कोई that's it. योजना नहीं That's बनाता all. He doesn't plan कि मेरे को किसी की हत्या करनी है, that कहीं I have किसी को to kill चोरी करनी someone, है, I have to go and steal something. उसके He do अंदर not make any such plans. विकसित नहीं हुआ, His intelligence is not उसके अंदर developed to विकसित this नहीं हुआ, extent और to उसके अंदर think. उतना ज्ञान भी नहीं है, तो इसलिए It doesn't have that level of उसके knowledge लिए वो also. देखने में बहुत So if you see a child, मासूम और the सरल child दिखाई पड़ता है, उसके appears to कारण be ये है कि very उसके अंदर beautiful and innocent. अहंकार पैदा नहीं And that हुआ, is because he has not, और जैसे the जैसे हम ahankara बड़े has होते not हैं, developed so much in him. हमको ये जो And बुद्धि as we grow up, भगवान ने दी
the facility of intelligence that Bhagavan has given to us, we start misusing that intelligence. And then जो होता है वो दुखदायक the होता है। result is suffering. तो उसको भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो So भगवान that is what Bhagavan is ऐसे teaching here. समझिए कि उनके उनका भाव जो है वो बच्चे की तरह रहता है लेकिन बुद्धि के साथ में। So Bhagavan's bhava is जैसे like बच्चा a जो है child with उसको but with कर्म great आता है, intelligence. That's why his actions are not called karma, they are called leela. Leela means a इसके play. आंग्ल भाषा में दो अर्थ हैं। एक तो जो हम खेल And play खेलते has हैं, two meanings in क्रिकेट English वगैरह, language. फुटबॉल One वगैरह, is like we play, say एक जो cricket, football, स्टेज के ऊपर etc. नाटक किया जाता है And उसको the other खेलते हैं। is तो दोनों ही अर्थ हैं। doing play on the जब हम stage. क्रिया So करते both हैं जैसे meanings are there. स्टेज के ऊपर नाटक कोई करता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो वास्तव में गुस्सा नहीं होता So है, like suppose some there is a play going on and a person has become angry वो in the play, अहंकार नहीं or करता he है, is killing somebody. So actually he is not angry. He is not having any ahankara for तो हम killing भी or इसी anything. प्रकार क्रिया करते हैं। So Bhagavan also इसलिए works like this 18वें only. अध्याय में वो यहाँ तक कहते हैं That's why कि in आप 18th chapter he अहंकार goes to नहीं the रखना है extent क्रिया के प्रति, speaking that if you do not एक have ahankara आपको for बुद्धि any होनी चाहिए, action, then even after killing you will not be implicated in sinful activity. बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कहता वो मारता नहीं है ना उसका बंधन होता, So he किंतु says that he does not kill, क्रिया he के does not कर्ता become नहीं है। bound. But why? Because he does not become the doer तो of that भगवान इसी action. तरह से ही है, So Bhagavan is also like this only, like a इसलिए child. वो देखने में इतना सुंदर सौंदर्य That's दिखता है why हमें। he appears so beautiful. He is beautiful, सौंदर्य but एक प्रकार का प्रकट होता है जब हमारे अंदर beauty अहंकार नहीं होता है। gets becomes manifested इसलिए आप देखेंगे nicely कि when we do not have the सबसे सुंदर ahankara. That's why you will जो see that the भगवान great के भक्त saints होते हैं they appear like children. उनका चेहरा अगर आप देखें तो इस If तरह you से see their चमकता है, face, इस they appear प्रकार like की children जो एक अहंकार का because भाव है वो नहीं होता they do not have that sense of ahankara in उनका them. स्वभाव बच्चे की They तरह remain रहता है। free from समझिए that. का That's मतलब why ये नहीं है कि वो अज्ञानी they होते हैं, swabhava is like children. Now here children child does not mean that they are ignorant like a child, सब कर्तृत्व but it only भाव means दूर that रहता है, when they सबके work, कल्याण के they लिए do not करते हैं। have the sense of doership in that. They work for तो others' जो benefit. क्रिया करते हैं So one कि is that we कुछ work प्राप्त करना, because we want to और get एक जो something, क्रिया करते हैं कि and हमने the कुछ other is प्राप्त कर लिया। we work तो जब हम प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं तो हमारी फल में when आसक्ति we होती है। work to get something, then we have हमने कुछ attachment to प्राप्त the कर लिया action. है जीवन में, And when we have already attained something, जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको पा whatever लिया is है, the goal of our life, we have obtained तो that, we भगवत have साक्षात्कार को achieved that, समझते हैं। whether it is self realization or तो realization of क्रिया Bhagavan. फिर So then also we सबके work कल्याण के लिए after that करते हैं। realization. So then that action that is for the benefit of society only. तो ये And in भगवान that कहते हैं activity, there is no such desire to obtain this or that. तो ऐसे लोगों को ही So समाज में these people साधु या संत की are उपाधि दी जाती called है, saints or sadhus, और भगवान तो उसके मूल स्रोत हैं ही। and Bhagavan is the origin of इसलिए that. जो कहा इति माम यो अभिजानाति, तो अभिजानाति माने जो ठीक प्रकार से इसको So समझता here है, Abhijanati जिसको means ठीक one who समझ understands this जाना properly. होता है, तो वो फिर कर्म से उसका बंधन नहीं होता है। Then such a person does not become bound. जो कर्मफल की स्पृहा करता है, One who desires the fruits of पूछा actions, कि भाई अगर because this अच्छा question ना may है be raised तो कर्म क्यों करें, that जो if इच्छा we पूर्ति do के लिए not कर्म नहीं desire करते थे, for action, for the fruits of actions, why should we work? तो भी कुछ नहीं करते Because थे। without a purpose, even a fool does not do anything. तो So then फल आएगा लेकिन उसमें आप आसक्त we will मत get the होइए। fruits, but we should not become attached to that. यदि फले सक्तो निबध्यते, जब फल में हमारी आसक्ति हो जाती है When we become attached तो to the उसी में ही fruits, बंधन होता है। then we become bound. बंधन जो है कर्म के साथ में वो फल के कारण ही होता है। So the तो attachment जो happens व्यक्ति to the fruit. फल में आसक्त रहता है One who वो remains वास्तव attached में to the मनुष्य fruit, जीवन जीता है,
that person always lives in उसका future. मन जो है हमेशा His भविष्य का ही mind सोचता is रहता है, always pondering over the future. वो वर्तमान में नहीं रह सकता, He क्योंकि cannot live वर्तमान in में the सिर्फ दुख present कष्ट दिखाई देता है। because in the present he sees only मेरे suffering. अंदर अपूर्णता है, मेरे अंदर कमी है, मेरे को कुछ प्राप्त करना है, और जब मैं उस So चीज़ in को the पाता हूँ present तब मैं पूर्ण हो he जाता हूँ। sees that I have some deficiency in my life, I have so many gaps that I have to वो fill, तृप्त रहता है। and that can be done only in future. So he always lives in जब future मिलेगा तो भी and दिखेगा, he always suffers. And even after क्योंकि getting the result, फल के he बारे में सोचते suffers हैं किसी के because बारे में, when we are always तो thinking about the fruits of the सुख जो actions, सुख प्राप्त then होगा we उसकी all कल्पना करते हैं, only imagine लेकिन उसके साथ ही the positive aspect of that असुख के result, बारे में हम but सोचते along हैं, with the positive the negative will also be there. It will, along with the good part, it will bring suffering also, but we do चाहे not स्त्री या पुरुष के prepare बारे में ourselves for सोचते हैं, that. आपकी बहुत If you have attachment to some man or woman and you have जैसे strong desire उसमें हमारा जीवन to get गुजर that जाए, person, then you think that, oh, I will be very happy उसकी with जो है this type of person, वाली because you are only साइड ही देखते हैं, uh, seeing one सुख side का of that एस्पेक्ट ही person, ध्यान में रखते हैं, लेकिन the उसके साथ pleasurable जब aspect. व्यवहार करेंगे, But उसके when you start किस dealing with प्रकार that का person, आचरण है, किस प्रकार का then what type of व्यवहार है, behavior he or she गुण has, what दोष is the है, character, तो आपका what ध्यान are the भटक जाता है, तो faults, अच्छे गुणों पर ही जाता you है, do not focus on that. You focus only on अच्छे the दोषों पर positive बुद्धि जाती aspect है, because you want to get that person. Because if you ponder अच्छे over the दोषों पर faults बुद्धि at that लगाते person, रहते then you हैं, will not strive to get that person. इसी प्रकार That's कोई why बिजनेस you करने don't जाता see है the तो faults. सोचेगा कि नहीं तो Like मैं if some person wants to do व्यापार some करूंगा, business, then he plans that if I do this business, I will get so much profit, I will get this or that. ऐसा नहीं कि But इसके he साथ doesn't know कुछ that along with समस्याएं that, there will be problems जो also in business. आपके विघ्न आएंगे, There will be उसके बारे में obstacles वो सोचता also. नहीं है, It doesn't think about that. वो अपनी कल्पना में डूबा रहता है, So that such a person always वो दूसरे remains in his दूसरे imagination. दोस्त की सिर पे रख के मटकी दही की वो बेचने So जा the रहा one है, person, he was selling curd, तो so he had a वो pot of curd on his head and he was going to उसके sell that, and he was imagining, I will sell दही this, दही then खरीदना I है, will get 10 rupees profit, then I will buy more, then I will sell तो more, इस कल्पना then में I वो will डूबा get so रहता है much, कि so हमारे much, पास बहुत and पैसा then है, he हम imagines शादी that करेंगे, I will have lot of money, I will get married, I will have children, और फिर मेरी and पत्नी then मेरी बात my नहीं मानेगी, wife will not listen to me, and then I will kick her like this. ऐसे डांट मारूंगा, तो उसने अपनी गर्दन हिलाई कि मैं उसको I ऐसे will डांट I रहा हूँ, will chastise her like this. So he shook his head, और उसके and then the pot of उसके curd fell पैसे उड़ down. गए। All the curd was lost. तो ये फल के कारण जो है वो So हमेशा due मन to attachment to result, अशांत रहता है, human being फल की चिंता में always remains disturbed वो डूब and in जाता है, anxiety, और वो always worrying भूतकाल को about भूल जाता है, result, and he वास्तव में forgets the present. भविष्य और भूतकाल जैसी कोई चीज है नहीं, Actually, there is nothing अगर called हम ठीक से विचार करें present. तो भविष्य Sorry, जैसी कोई actually, there is nothing चीज called होती ही past नहीं or है, future. There is समय तो no हमेशा future. वर्तमान में ही है, Time is always in विचार करें present तो वो only, भूतकाल ही and गया, future is भविष्य future तो है only. नहीं, It will तो हमें जो वास्तव में never उपलब्ध है come वो तो because वर्तमान में you'll, ही है, future is always future. लेकिन So what we वर्तमान have जो is है present वो only, वर्तमान को but पसंद नहीं our करता, mind does not like the इसलिए जब हम present. जप करने बैठते That's हैं, why when you sit ध्यान करने for बैठते doing हैं, japa, तो for आपका doing dhyan, मन जो है वो भविष्य में then जाएगा, your mind will go into सोचता the रहेगा इसने मेरे को future, ऐसा कह दिया, thinking something. मैं उसको He ऐसे told बोलूंगा, me, he told मुझे like ये करना this, है, मतलब I will do एक this, I will do that. वर्तमान को छोड़ Meaning, के भूत या the person भविष्य is को छोड़ के always वर्तमान में वो living खो in चुका है, मृत गया है, past or in the future. स्मृति के अंदर मृति घुसा हुआ है ना, The Smriti word contains the स्मरण word के अंदर Mriti. मरण घुसा हुआ Like है, in Smaran there is Maran. तो So, उसी की याद करते रहेंगे, तो so मन we'll यही keep remembering that डूबा only. रहेगा So भूतकाल में, mind remains in these two only, either in the जब past or in the आप सुख future. की अनुभूति कर सकते हैं, उसमें वो चलता रहता Actually, है, where क्षण में you can फल के experience कारण हमेशा happiness आतुर रहता that है, is in present, you do not remain in that. हमारा So what मन happens is due to attachment to the fruits, the वो chitta always remains फल के कारण आतुर हो जाता है,
uh, और भगवान जो है disturbed, very much in वो दुखी anxiety, नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं always कर्म फल से always waiting for to get the fruit of the action. But Bhagavan does not have any यहाँ such attachment. है नहीं That's ऐसा। why he always remains happy, रात को जब हम because सोते हैं happiness is not somewhere else. बढ़िया से नींद आए तो कितना when अच्छा लगता है। you when you sleep भगवान बोले nicely, बाहर से थोड़ी आए हैं हम, then you feel so happy. So बाहर did you दिमाग में get that क्या है happiness from वही चलता externally, रहता from somewhere else? When you wake up, then है। everywhere समस्या else, इसी में everywhere है। around you see only anxieties and problems. तो अगर हमको वर्तमान में रहना है So if we have to live in the present, तो then फलाशक्ति से थोड़ी उसका फलाशक्ति की डिग्री थोड़ी कम करनी पड़ेगी तो we अच्छा have to रहेगा। reduce the degree of our attachment फल के to कारण जो है result, दुख होता है, and due फलाफल to से दुख the होता है। attachment to जब the हम result दुखी होते we हैं suffer, तो फिर हम और ज्यादा फल and की इच्छा then करते हैं। when we suffer, तो when we ये are एक miserable, चक्र चलता है। then we want that result तो more and more. फलाशक्ति के कारण हमको होता है दुख, Due to attachment to the और दुख result, मिटाने के लिए we हम और suffer, फलातुर होते and in हैं, order to get rid of the suffering, we इससे become even more attached to the और result. इससे फिर हम और फलातुर होते हैं, और So इस that तरह से gives us more ये suffering, and चक्र in जो है this वो विशेष way, this साइकिल vicious cycle continues. इसमें पड़े रहते हैं और इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। And then our whole life तो becomes goes away गीता हमको in this vicious इससे cycle only. निकालने की So Gita शिक्षा देती है। is teaching us how to come out of this vicious cycle. तो इस श्लोक में भगवान ने यही So बोला in है। this verse, this is what Bhagavan has taught, आत्मा वास्तव में किसी कर्म में लिप्त नहीं होती है। that the Atma actually does not become bound by आत्मा any तो असंग karma, है, असंग because है Atma निरंजन। is asanga. जैसे Atma भगवान आगे कहेंगे 13वें has अध्याय no में, sanga with all this. शरीरस्थोपि कौन्तेय न Later कर्मण्य in Gita, Bhagavan will say कि शरीर में रहते हुए भी आत्मा that while living in the body कर्म also, करता है the कुछ नहीं Atma does करता। not do anything, ये does लिप्त not भाव become से implicated in anything. भगवान ने ये प्रयोग किया This लिम्पंति। lipta इसका or मतलब limpanti लेप करना, means to do lip, जैसे आप दीवार के ऊपर like you apply paint on a रंग का wall, लेप कर दें, या अपने चेहरे पर आप कुछ or लेप let's लगाएं। say you apply some ointment or तो cream ऐसे ही on जब your आप face. कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं Similarly, when you तो उसका do कोट karma चेहरे with पे some लगता है। desire for fruit, then there is a new paint और उस on लेप our होने के chitta, कारण में and हमारी due to दृष्टि जो that है paint, वो धुंधली हो जाती है, जैसे our ग्लास से vision देखते हैं तो becomes उसमें हमारी clouded, like चमक खो we जाती है। see through कुछ the गंदगी आ spectacles. जाए, कुछ लेप So कर if दें there is some तो dirt ठीक से दिखाई or नहीं dust देता on the है। spectacles, then we will not be able to see properly. तो ऐसे हमारा चित्त Similarly, जिसको on our chitta also, the चित्त chitta which is known as darpan or दर्पण mirror, मार्जन, like Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Cheto चित्त को darpana marjanam. दर्पण से So तुलना he किया है। compared the उसपे अगर chitta कुछ with a आगे mirror. लेप लग जाए तो So if दिखाई नहीं there is देगा, some lepa on that, चेहरा नहीं some दिखेगा। dust on that, then you will not be able to see इसी yourself. प्रकार जब हम कर्म फल की आसक्ति से कर्म करते हैं तो Similarly, हमारे चित्त when में we do karma with attachment to the result, then there हमारी is a दृष्टि lap जो है on this paint on our हो chitta, जाती है, and then our जैसे vision हम becomes बहुत ठीक clouded, से नहीं देख meaning सकते। that we are जैसी unable स्थिति है to वैसा see हमको समझ में anything नहीं आता। clearly anymore. Meaning that we do not analyze or अज्ञान understand the करणम situation as it is. अज्ञान Our कर्म knowledge फलेषु becomes clouded. मोहयन्ति जन्तवः। और फिर जब हमको अज्ञान पैदा हो And जाता है तो then हम मोह when में पड़ there is जाते हैं। ajnana or ignorance, then we fall into मोह का मतलब illusion, यही होता है कि जो into चीज़ moha. जैसी है We उसको become वैसा ही देखना, bewildered. Moha also means that मोहित हो not जाना, seeing something as it is, बात को ठीक से समझ नहीं रहा है। meaning that person तो is ऐसी not आसक्ति में पड़ understanding जाते things हैं। properly. So this attachment to phala also does this only. It puts us into illusion or तो इससे moha. बाहर निकलने का उपाय जो And है what is the method how to get out of it? Bhagavan is आप telling that इसको only ठीक here, समझिए, that you should understand this देखिए मैं भी कर्म करता हूँ properly. लेकिन मैं See कर्म में me, लिप्त नहीं I होता। also do karma, but I do not become implicated in the result of तो karma. फिर आगे So then, in the next verse, अगले श्लोक में फिर वो बोलते हैं he कि says किस तरह से how बहुत लोगों ने many people इस मार्ग को अपनाया followed और this इस ज्ञान path, को प्राप्त किया। meaning that तो कहते हैं they एवं obtained this ज्ञात्वा knowledge. परमं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरम कृतम। कि Translation: ऐसा जानकर knowing this, प्राचीन काल में even the ancient मुनि seekers of liberation करते थे। participated in वो action. भी पूर्व Therefore, पूर्व you too should perform such actions as carried out by the भगवत ancients in former times. So here Bhagavan is giving an example ये बात because Arjun can ask कह रहे हैं that you are telling ऐसा all जानकर this, करने से that by knowing this, if we perform ये होगा। action, we will not become क्या ऐसा bound. कुछ लोगों ने Then किया है क्या पहले? is there any precedent? बहुत लोगों ने किया है। Has anybody ever done it earlier? Bhagavan says many people सिद्धि have सिद्धि में स्थित done रहने that. वाले Earlier also he जनक said आदि जो ऋषि हैं, that सिद्धार्थ Janaka and the other ऋषि rishis, वचस्पतयः even in this भगवान chapter, he said that आयुष्मान मनवे प्राह मनुरक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षय कि जो बहुत बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, ययाति the हुए, great Rajarshis पृथु हुए, like भरत, Yayati, ये Prithu, Bharat, ऋषि हुए there have been many जो Rajarshis राज्य who, करते हुए उन्होंने while कर्म किया, managing their फल में kingdom, आसक्त नहीं they हुए performed karma, but they did not become और उसी से attached to सिद्धि that. प्राप्त की। And that is how they perfected their life. तो They got Siddhi. आप भी ऐसा ही कीजिए। So you also अर्जुन should भी उसका work like उपदेश this. देते हैं कि So जैसे he is instructing Arjuna राजर्षियों ने also किया, और विशेष तौर से ये जो कर्मयोग की that बात how these Rajarshis did कि this karma. संपूर्ण So ही especially he is राजर्षियों talking का about karma yoga. He is कार्यक्रम telling this karma yoga is meant राजर्षियों mainly का for Rajarshis only. कि राजा लोग ही इसको समझते थे, करते थे, The kings they used to इसलिए understand this and do karma because the king होता था समाज का। used to be an ideal for the society राजा बनना in कोई the ancient बच्चों times. का खेल नहीं था, Becoming a king was not a शिक्षा child's प्राप्त play. करनी पड़ती थी, They had to कर्मयोग get द्वारा, lot of education तभी and वो become राजर्षि qualified, and only then they could समाज का become a निर्माण king करते थे। so that the society can be benefited. कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, Like it is said जैसा that राजा होगा वैसी the प्रजा way होगी, the king behaves, accordingly the जिसके जैसे subjects कर्म also होंगे behave. वैसे ही लोग होंगे। They just emulate their king. तो पहले So people in राजा general लोग they emulate the ऋषि तुल्य leaders. ऋषि तुल्य So होते थे, earlier the kings were on the standard of जिसके पास में rishis. वैभव था, They used to rule the उसमें kingdom. आसक्ति नहीं They थी, had lot of wealth, opulence, इसलिए उसको but they were संसार never में attached to that. That's why they used to give it up अंतिम समय and go to the forest जिसके जिसकी आसक्ति होगी at तो almost at the fag end of उसको their life. तो अनेक राजा Otherwise, if you are attached, how will you give it up? पांडव लोग So भी there is example of so many अपने धाम kings. पधारे थे, Even उनको भी Pandavas, राज्यभार मिला, when they came to know that Krishna उनको has भी राजा बनाया, left this earth to go to his abode, उसको then पकड़ they लिया। coronated Parikshit as the king and they left the kingdom and went towards the Himalayas. इतना So, ऊंचा पद despite पा लिया, having इतना so much प्रतिष्ठित, wealth, वो कोई अचानक से how थोड़ी हुआ था, could they give up प्रोसेस everything? था, Did it happen suddenly? No, युधिष्ठिर it was महाराज there को from beginning only. अपने So regarding पिता की Yudhishthir Maharaj, it is said in the Bhagavatam संपत्ति also थी, वो इंद्र that से भी अधिक थी, he had more wealth than क्या even था, Indra. काते सुरसप्राहा के देवता लोग भी So there it is said चाहते थे कि that ऐसी the ऐसी वस्तु Devatas हमें they मिले, also desired that we also should जिसकी have जिनकी such a आसक्ति नहीं थी। wealth, opulence. तो उसमें But उदाहरण दिया Yudhishthir Maharaj did not have attachment to that opulence. बहुत So क्षुद्र there it चीज is, जिसको an कहते हैं example is given. लगी हुई, Like if a उस person समय is too much अगर hungry, फूलमाला दें, that time if you give him a flower garland उसको or apply chandan कहें इसको or करो, perfume, तो उससे उसकी कोई संतुष्टि नहीं होने वाली है। so that will not give him any satisfaction. तो इसलिए ये What he wants is food. वैभव से आसक्त Similarly, नहीं था, these people like the Pandavas, their इसलिए hearts were not attracted by this opulence. Like recently we studied the इसलिए story of Sudama in Srimad Bhagavatam. So there also it was taught लेकिन that सुदामा को Bhagavan gave so much wealth, opulence to Sudama. उस वैभव की But it is shown नहीं हुई, that Sudama did not become attached or implicated to that wealth, opulence. He just इसलिए वो accepted ऐसे it as mercy of Bhagavan and led his life in a very simple way. He had no attachment उसकी to इच्छा all थी that opulence. Rather, his जन्म only मृत्यु desire मुक्ति was ही प्राप्त हो। to get bhakti तो for इसलिए यहाँ Bhagavan in भगवान every birth. उदाहरण दे रहे हैं कि इस बात को So, जो Bhagavan समझता is है, giving example here that one who understands ये this, पद जो है वो
This word gyatva is very important in this verse. Earlier also he said abhijanati. Then prior to that he said evam yo vetti. One who knows, one who after knowing. So this knowing understanding is very important. And this is on, and it is only possible in this human form to get this knowledge. So that is why we should strive to understand, to learn Shastra. We have got this human form of life. So in this life we should get this knowledge because Bhagavan has told Gita very mercifully. So we should study that, and it is not so big also like the other ones. It has only 700 verses. At least let us understand this much. Even if we understand Bhagavad Gita, our life will become successful. It is said in Sanskrit, there is an aphorism which says that without knowledge, mukti is not, liberation is not possible. Why? Because this bondage is due to ignorance, avidya. बंध मोक्ष इति व्याख्या गुणतमेन वस्तुतः गुण प्रकृति के जो गुण हैं जिनके So the कारण gunas of Prakriti, due to which we get with avidya, they are the cause of the bondage. And in order to understand that, we need knowledge. तो इसलिए कहते हैं कि इसको जानकर जब आप That's कर्म why करोगे he says आप that कर्म दो तरीके knowing से this when you will do karma, you can do karma in two ways. One is you can do karma out in knowledge, and another is karma in ignorance. Actually, का जो भेद हो जाता है वो हमारे भाव के अनुसार ही होता है the division of action happens due to our bhava. लेकिन Two क्योंकि people are doing the same action, but because they have different bhava, there is difference in their action. एक स्त्री है उसका पति उसको One आलिंगन करता है woman is being embraced by her बेटी husband, है उसका पिता भी उसको आलिंगन and करता है the daughter is also being embraced by the father. So there is a difference in the bhava in both the पिता भी embraces. उसको आलिंगन कर रहा है लेकिन So उसका the wife is also lady, the daughter is also lady, कारण but भिन्न है the intention, the bhava behind both the embraces is different. और ये भाव जो है वो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है And this bhava depends on knowledge. इसलिए इसको समझना That बहुत is why आवश्यक है it is very important to विशेष तौर पे जो understand this, मुमुक्षु हैं especially those who want ये जो चार liberation. पुरुषार्थ बताए धर्म अर्थ The काम four purusharthas which were said उसमें चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है और out वही of four purusharthas. असली पुरुषार्थ है वही अंतिम पुरुषार्थ है बाकी तीन तो उसकी सहायता के लिए हैं So the liberation, the moksha is the last purushartha. The other three are to support this only. आप अर्थ को The प्राप्त goal करने of के लिए life is to रहेंगे कर्म काम तो get liberated, get out of this. If you say karma is only your purushartha, then you will remain here only. If you make dharma as your purushartha, you can go to swarga, but still it is within this मोक्ष material world only. उसके लिए ये ज्ञान So, होना आवश्यक है in order to get moksha, इसलिए liberation, भगवान कहते हैं कि आप this knowledge is essential. इस बात को समझकर So, Bhagavan is telling that you should understand this and then do अर्जुन क्या karma चाहता था properly. अर्जुन की इच्छा थी So, what did Arjuna want? इस घोर कर्म में युद्ध में क्यों लगूं ये प्रश्न किया था Arjuna's question was that why should I engage in this ghastly war? Why are you engaging me in this war? And he had referred to the war as Ghor means ghastly, very deadly war. जीवन बिताऊंगा लेकिन भगवान क्या उपदेश देते Earlier हैं he had said that he preferred to live on by begging rather than fighting. गीता में भगवान But Bhagavan said that this is your karma, बार बार this fighting, so you should do your karma. की बात In Gita, Bhagavan is मनुष्य योनि placing lot of emphasis on doing karma. Again and again he is telling do your karma. Because this संन्यास human form, योग this is karma yoni. अनुकूल नहीं है Bhagavan is not putting so much बार stress बार इस on बात को कहते sannyas. हैं He is तयोश्च telling again and again. संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्म का संन्यास लेने से कर्मयोग करना बेहतर है एकम सांख्य Rather योगम than एकम च taking योग sannyas from karma, it is better to do karma. ये सांख्य है यानी कि संन्यास और योग यानी कि कर्मयोग एक ही है
यत् स्थानम प्राप्यते सांख्यैतैः योगैरपि गम्यते, जो आप संन्यास से प्राप्त करेंगे वो आप कर्म Whatever योग you से, will get from sannyas, you can get it from karma yoga also. पर वो बहुत बल देते हैं, क्योंकि So हमारे अंदर Bhagavan कर्म places करने lot की of शक्ति है, stress on karma yoga सभी लोग because इसलिए we सोचते have हैं this समाज कैसे power चलेगा। to do karma yoga, to do सभी कर karma. सकते हैं If तो everyone takes sannyas, then how will the society continue? Some people can उसके take ऊपर that. ध्यान देने की They do जरूरत not है, have और interest सभी in karma, वैज्ञानिक वो भी and करते हैं, they take sannyas to give knowledge to others. प्रत्येक But that व्यक्ति also does not mean that they do not do any karma. कर्म So करना every चाहिए, person should do उसका karma शास्त्र में according to his or her swabhava nature and according to उस the प्रकार से instructions of अगर आप shastra. करेंगे तो And आपको when you will work like this, then you will not become bound by विद्या जो है karma. So this knowledge देते हैं, is being पूर्वज imparted by Bhagavan. जो पूर्व के लोग हैं ये How भी the कर्म करते हैं, ancients, your ancestors, उन्होंने इस how प्रकार से they कहा, performed karma, और how मैंने इस they did प्रकार से कर्म karma. किया तो उसमें दो So the प्रकार की way आपकी they इच्छा did that, how did they do? प्राप्त कर So और that कर्तृत्व is by अभिमान giving up the desires of ऐसे results कीजिए, and giving up the sense of विद्या doership. स्वरूप कर्म समग्रम In this way, you should also perform karma. फिर आपका कर्म जो है वो यज्ञ बन जाएगा। So then, if you work like this, आप जो भी करते your हैं वो karma उसमें will सबकी become भागीदारी होगी। yajna. आप भोजन करते हैं वो भी यज्ञ होगा, What you eat, क्योंकि वैश्वानर अग्नि में आप eating will also become आहुति yajna. डाल रहे हैं। It will be like giving ahuti in the स्वाध्याय Vaishwanar तप fire in the stomach. यज्ञ प्रवृत्त, आपका कर्म जो है वो लीन हो जाएगा Your karma और will become yajna. कर्म से ही आपको मोक्ष मिलेगा, न कर्म And by this संन्यासात् karma only you will get निष्काम liberation. पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समुधिगच्छति। तो निष्कर्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, So getting neshkarmya, moksha, liberation from the bondage of karma, वो कर्म करके ही होगा। that is all possible इस by doing प्रकार से karma जैसे only. So it is like, आपको कोई रोग हो जाए say you और उसका you इलाज जो है have some जिस disease चीज से किया जाए and उस चीज से बना the हुआ है, remedy is with the same thing तो due to which the disease happened. हैं, Like in homeopathy, कुछ पोटेंसी देते हैं उसी चीज they में give some, जिससे रोग होता है, there is some ingredient in the medicine. The disease also happens due to that only, and it is used for the remedy also. So it increases your immunity, and then the इसी प्रकार disease से goes away. भगवान ने कर्मयोग इसलिए So बताया karma कि is like कर्म this only. करके Bhagavan is speaking about karma बंधन yoga, छूट जाए। so that by doing karma, you जैसे become कहते हैं कि लोहा liberated काटने from के the लिए bondage of karma. It's like तो लोहा iron is used काटने के for लिए cutting लोहे की iron. आवश्यकता पड़ती है, For cutting iron, you need वैसे ही iron कर्म only. बंधन काटने के लिए Similarly, to cut this bondage of कर्म की karma, आवश्यकता है। you have to do karma. और उसमें मेन चीज यही है कि आप And the main point in that is this only, उस that अहंकार से मुक्त हो जाएं, you और यही असली संन्यास है। become free, you become free from the ahankara. और And यही this is केवल real sannyas. And this is an internal bhava only. करते हैं, तो वास्तव में केवल आपको अपना भाव बदलना है। When you are doing karma, mainly what you have to change is your bhava. इस And the आंतरिक focus of Gita is बदलाव में ही on internal इनर inner ट्रांसफॉर्मेशन, transformation. तो ये आंतरिक बदलाव So this inner transformation भाव का बदलाव है, is the transformation of क्योंकि आपको bhava अपनी only, सोच बदलनी है, meaning that और you उसके have to लिए change your thinking. ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। और And वास्तव for में that, it is essential to get knowledge. And getting knowledge is also a karma. तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु Learning तपः, Shastra is also a karma. कर्म किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, Without doing any karma, we cannot live. लेकिन उसको जानकर ठीक प्रकार से सोचकर करना और एक अज्ञान में कर्म करना, तो उसके दोनों के फल So there are different results of doing karma in knowledge and doing karma in ignorance. कर्म का विज्ञान भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और ये आगे चलता रहेगा। अभी इस पूरे अध्याय में कर्म के ऊपर ही विवेचना होगी। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। So this discussion of karma will continue, and we will stop here. If you have any question, you can ask. परमानंद जी का प्रश्न है, Question: क्या यह कहना उचित है कि भक्ति भक्तों की
Is it appropriate to say that bhakti is the breath of bhaktas and therefore that is why bhaktas do not accumulate karma? Answer: yes, bhakti is the life of devotees. उसके बगैर तो जी नहीं सकते हैं। Without bhakti, bhakta cannot live. स्वाभाविक है, उनका स्वभाव ही है। भाव भक्ति होता है ना, It is their swabhava, like you have bhav bhakti, sthai bhav. तो उनका स्थायी भाव ही है, उनका स्वभाव ही बन जाता है ऐसे। This is their sthai bhav, this is their swabhava. इसलिए बहुत They do नींद में भी bhakti. इनकी भक्ति होती है, सुसुप्ति Even में in sleep, they do bhakti. समाधि Even in अवस्था में, sushupti, they are आध्यात्मिक doing अवस्था bhakti. में, We are the three स्वप्न states that अवस्था, we सुषुप्त have: अवस्था, the wakeful state, the dreaming सुषुप्त state, हैं, and the state of निद्रावस्था में dreamless भी है। sleep. So, in all three states, the bhakta is doing bhakti because bhakti is हमारा their शरीर जो है life, वो तीनों अवस्था में चलता like रहता our है। breath. Breath is going जागृत on अवस्था in में, all the three स्वप्न, states: स्वप्न wakeful सुषुप्ति state, और in सुषुप्ति the में dreamful state, and in the हमारा state of अहंकार sushupti लय हो also. जाता है, तब भी हमारा सांस Even though चलता there रहता is laya of ahankara, है। still ऐसे the ही breathing goes on. So, similarly, bhakti goes on. Next question: are the root causes behind why we do not act without a desire is raga dvesh? हम्म, हाँ जी। Yes, the main reason is raga dvesh. And is इसका the cure ज्ञान discrimination? विवेक So और ज्ञान का the अभाव है। remedy is this only: getting knowledge. Next question: गीता का सार by जानना है learning Mahabharata and Ramayana, can we understand the महाभारत तो इतना विशाल essence है of Gita? कि आप So उसके answer: सागर में डूब जाओगे, और महाभारत के अंदर if ही you want to learn essence of Gita, you learn Gita only. Mahabharata is so big, you will there are so many जान topics. सकते हो Gita is in Mahabharata, so किसी विज्ञ it व्यक्ति is से आप possible to पूछोगे तो learn through शायद आपको Mahabharata समझ में नहीं Ramayana, आएगा। but that is not possible by self study. It is possible by चाहे learning रामायण from पढ़ें चाहे Guru. महाभारत पढ़ें, अगर आप Whether you study Ramayana, Mahabharata, तो if इसमें you are doing self study, सूक्ष्म बातें बुद्धि में then नहीं आएंगी। then you will not understand these subtle aspects इसलिए गीता में of भगवान dharma. कहते हैं ना, That's why तद्विद्या in Gita, तत्त्वज्ञानम Bhagavan says तत्त्वदर्शिन सेवया, that कि उसको जानना है तो आप if you want to learn the ज्ञानी truth, में ज्ञान दर्शन है, ज्ञानी जो ज्ञानदर्शी है उसके पास में then you जाइए, approach the उसका अध्ययन person कीजिए। who is in knowledge, who has realization of knowledge of the tattva. So you learn from him. फिर से बोलो। धीरलाल जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Radhe धीरलाल Radhe, पूछो। can you hear me? यस, Radhe Radhe, sorry about that. हिंदी में बोलो। Thanks for the class. I'm having difficulty in applying this. Simply being everything is an action, and it's quite easy when it comes to something inert like your celery or some fruits like that, be detached to it. But building relationships is also an action, and to be completely detached from the fruits, because there's always some anticipation on building a relationship with the person. It almost you can be accused of being cold-hearted or heartless. It's almost like singing a rag without any emotion or feeling. Then it's almost flat. How do we actually get this right with relationships, exactly in bhakti? नहीं, ये उनका प्रश्न यही है कि हम जब His सैलरी question लेते simply हैं is that when we are taking तो salary, हो सकते हैं कि हमारे मन okay, में कुछ there आसक्ति we हो may कि say मुझे that okay, दूसरे we के साथ become व्यवहार करना detached है, from it. तो उसमें तो But हमारा when कुछ we are making relations with भाव others, आना then चाहिए, there we should invest some emotion in ताकि that. दूसरा व्यक्ति सोचे कि Otherwise, the other person will think that this नहीं, उसको other fellow is आपको stone-hearted, इसलिए is very करना पड़ता है। cold. जैसे मैंने कहा ना कि No, you have to behave in जैसे the बच्चे same way को only like आप how others behave, like a play. इमोशन दिखाते हैं, वो So you show your emotion, etc., everything in the play, but दिखाते you हैं। remain अगर कोई detached. अच्छा जो एक्टर होगा, The a good actor, अभिनेता, तो कितनी अच्छी तरह से अपना how nicely that रोल person निभाता will है, play the role. तो दूसरे को लगता है कि ये तो So, वास्तव and में the audience will ये तो think वास्तव में ही that yeah, he's really very angry or really he is in love. वो एक So you have to deal like that. थोड़ा जो मैंने शायद
So there is a joke that there was a couple. They went to watch a play in the theater, and it was a love story. The movie was about some love story. So it was a very nice love story, and the couple enjoyed it very much. And when they were coming out of the theater, the wife asked the husband, "Why don't you love me like this, the way is shown in the it was as it was shown in the play?" So the husband said, "You are a fool. You don't know how much money this person has taken for playing that role. He is not just doing that for free, and you want me to love you for free." So the point is that you can also do like that. That is a play. हमको एक्सपीरियंस नहीं है बिना हमारा राग. So can we also say that we do not have experience of this, so then we are unable to understand that what is the meaning of love? जब भगवान के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, भगवान को जो प्यार So when we become absorbed in Bhagavan, then the love that Bhagavan has, we also get that without attachment. So that attachment can be seen in two ways. One is that he doesn't have any material attachment, and then he has spiritual attachment, so that is very good. तो उसको थोड़ा ऐसे ही देखिए जैसे पिक्चर में होता है, चलचित्र में, मूवी में, स्टेज पर. So like some play is going on, theater, movie. So do like that. Nobody will understand also. Babaji, doesn't that also sometimes lead to like duplicitous relationships? Or so question, is it not going to lead to duplicity? So if you want to get liberated from this world, you need that kind of duplicity. Otherwise remain implicated here. Like we said, to get the bondage of karma, you have to do karma. So to cut the bondage of relation, you have to make relation, but don't become attached in that. What does Bhagavan say in Gita? How others are relating with you, is that true love? You know that is not true love. So when their love is not true love, and when you know what is true love, then why you become implicated? You also deal like that only. Bhagavan himself has given that formula. The way you are loving me, I am also loving you. But you are doing that out of ignorance. I am doing this out of knowledge. I am not less than you. The person in knowledge, how can he be less than the person in ignorance? You show me attachment, I will show you 10 times attachment. This is the art of living. If you have to live in this world, then you live like this. Otherwise, the other option is you take sannyas. But Bhagavan is telling, don't take sannyas, you do karma. तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं. तो सीखिए इसको, थोड़ा अभ्यास करो, और जहां प्रेम आपको रखना है वहां वास्तव में रखिए. So you have to learn this, you have to practice, and where you should actually have love, that there you should do it actually, like in Bhagavan and those who are related to Bhagavan. नवदीप जी पूछते हैं कि जब कृष्ण कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना Question, करने के लिए आता हूं, when Krishna says that he comes to establish dharma, is he referring to karma that supports the proper functioning of the world and elevates consciousness, or is he also referring to bhakti or bhagavat dharma? So question, what is the difference between both? Is bhakti not going to elevate the consciousness? Bhakti is all merciful.
Bhakti is most auspicious. भक्ति के गुण बताएं तो सबसे पहले तो यही बताया उसने। In Bhakti Rasamrita Sindhu, the 6 qualities told for Bhakti. So one is Shubhada. It is auspicious for everyone. दोनों में भेद क्यों करते हो? Why are you differentiating between both? मेरा एक प्रश्न है बाबूजी, आपने बताया कि कर्म फल की इच्छा से किया गया कर्म हमारे So जीवन question, you said that when we do karma with the desire for result, it puts a lap or a paint in our chitta. So what is this paint? That paint is samskar only. It creates new samskaras. Samskar is also like a paint only. प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।